के साथ रहूं, अभी तो जस्ट आया था। सो वो क्या चीजें दिमाग में चलती थी आपके? या सबसे इमोशनल साइड ऑपरेशन नहीं, शायद गुड बाइज होते हैं। मतलब बिकॉज बॉर्डर पे सिर्फ एक ऑफिसर नहीं जाता, उसके साथ उसकी एक फैमिली जाती है, मेंटली जाती है। तो सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि सर, जब आप घर छोड़ते थे, पेरेंट्स को बाय बोलते थे, फैमिली को बाय बोलते थे, तो वो एक चीज आपके दिमाग में क्या चलती थी कि मैं जाऊं अभी जाके अपने देश के लिए काम करना है, फैमिली के साथ रहूं, अभी तो जस्ट आया था। सो वो क्या चीजें दिमाग में चलती थी आपके? Ridhima, that's a very nice question, and it's got a beautiful emotional ring attached to it. जैसे आपने मूवी के बारे में बताया ना, मेरे दिमाग में भी सबसे पहले वही एक ख्याल आता है। आई थिंक बॉर्डर फिल्म का गाना है कि जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा रुक जाओ, समथिंग लाइक दैट। Every time, and I was quite young when I started, separate from the family. 16-year boy is, very, very young, very impressionable. Not yet broken out. He is not ready to face the world. तब से ही हम लोग, we are facing this separation. And it kept coming every time you come back on chutti, every time, you come meet, stay with your parents, the parting becomes that much harder, right? People always think, the soldier leaving home in uniform and think about patriotism and bravery. Ki, oh, bloody, और जैसे पंजाबी में कहते हैं कि लामाते जा रहे, लामा इज अ बॉर्डर, लाम, तो लामते जा रहे टाइप एंड ऑल दैट, oh, bloody good. But what goes on inside the soldier's mind and heart, only the soldier knows, or possibly his the closest kith and kin knows, right? Because behind every deployment is a very private emotional moment. The hardest part is not always the danger. Sometimes it's the uncertainty. So जब भी हम लोग जाते थे, NDA was still okay. My mother would cry like anything because I was the only child from the family who went to NDA. My brother, of course, was in the Naval Academy. He is a naval officer. But then he went at a later stage after being to the college and all. I went at a very early age. मतलब खत्म हुई class और भाग गया. So my mother used to get very, very senti every time she would, leave me at the station. Dad was a very strong personality, still is. But then mother would cry. Later on, when I got commissioned, she would cry for the reason कि पता नहीं, my first posting was in Button, as I told you, in 1987. कि एक तो हमसे दूर जा रहा है, दूसरा कि I don't know what kind of circumstances is he going to be operating in and deployed in, because I was going at the border. JNK always is as hot and active as it is now. So the uncertainty about, I would, if I say it very, very plainly, he's going now, whether he'll come back or not. That is the very, very crippling part in every partition. Every time you separate from your families. Later on, when I got married, my wife used to find it very difficult, and she is from a civil background, so all the more difficult for her to understand. Ki, why do you have to go? Why can't I be there with you all the time? It took us some time to understand. By the time she understood, we had a son. Then the son wouldn't understand, and then the son and the wife and the mother would, stand together and cry or try to, stifle their tears because they wouldn't cry in front of me. Possibly they would have done that after I left. But let me tell you the other side. What went on in my mind? See, when I went to the NDA for the first time, um, there was a lot of uncertainty in my mind, a lot of insecurity, because I had never been to a hostel. I'd never been to a college. I was only, going to school from home and coming back home. So the prospect of, being with so many kids of the same age together, staying with them, sharing lives with them, was it was unnerving as well as exciting. So there was a, that deep rooted fear कि यार पता नहीं कैसे होगा वहां पे and all that. और उसके बाद it was not a college kind of an atmosphere. It was NDA. I mean, you were going there to train. So you didn't know कि training कैसे कराते हैं, कौन उस्ताद होते हैं, उस्ताद are the instructors, and then उसके ऊपर you have officers,
and then whole lot of stuff. How does the system work and all? Whether I'll be accepted there or not? Because when you join, you're not physically very strong. Let's be very honest. Everybody is almost the same. जो school का बच्चा होता है. It is only after those 3 years of rigorous training that you become stronger. At the end of the third year, of course, we were very very strong. जब शादी हो गई and I used to leave my wife behind, I would cut out a piece of my heart and leave it behind. I can say it that plainly and simply. But again, Ridhima, let me tell you this. It only used to be there for good about उस टाइम हम लोग बसेस में ही ट्रैवल करते थे. फ्लाइट्स वगैरह तो नहीं होती थी. तो बस में एक आधा घंटा तक वो रहता था आपके दिमाग में. उसके बाद में योर माइंड वुड गेट ऑक्यूपाइड इन समथिंग एल्स. And then, of course, when you go and join the units, I will not say you forget about the past, but you're not so much concerned about what you left behind. Then your mind would start working and focusing on what lies ahead, what you're expected to do. Staying in the army, it's a very, very exciting life. It's full of challenges and lovable challenges, I would tell you. If I go back and, think of those challenges, I now think कि यार उस टाइम अगर मेरा माइंडसेट कुछ और होता, एक एक छोटे यंग ऑफिसर जैसा नहीं होता, तो possibly I would have done better and enjoyed that moment. So, it teaches you all that. And I would like to also tell you something, that all this has made my family very, very strong emotionally. My kids, they have changed. They have, moved on from one school to another. My son almost had 11 schools before he passed out from 12th, and my daughter had 9 schools. So you can imagine, almost every year and a half, we would move. Because in the army, if you do well, you will keep getting posted. And then, as officers, we are trained to control our emotions. But there are moments, looking back at your parents, your wife, your children before departure, where silence, says more than words, I would say that. And over time, you learn to compartmentalize emotions because duty demands clarity, and emotional detachment is never, never complete. I would like to finish this answer with one beautiful quote, which I've wrote myself. The uniform may belong to the officer, but the sacrifice is always shared by the family. यस सर, एब्सोल्युटली, लाइक अब ये तो समझने वाली बात है। जैसे मैं कहीं ट्रिप पे जाती हूँ, हमारे ऑडियंस में से कोई कभी भी ट्रिप पे जाते हो, तो सुबह उठे नहीं कि मम्मी के 5 कॉल आ गए, बेटा कहाँ है, कैसा है, खाना खा लिया, खाना नहीं खाया, ऑल दीज थिंग्स। बट ये वाली सीखने की बात है कि जब कर्तव्य और फर्ज की बात आती है, तब हमें छोड़ना पड़ता है, बिकॉज हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हैं एंड वी हैव टू फुलफिल दैट। ओके सर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि हम लोग यूजुअली इंटरनेट पे देखते हैं, एंड ये स्पेशल डिमांड है ऑडियंस की इस क्वेश्चन की। जैसे हम लोग इंटरनेट पे यूजुअली मिलिट्री को जैसे फैंटेसाइज करते हैं, सीरियस फेस, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, डेंजरस ऑपरेशन। बट इतना तो सर कहीं ना कहीं हमें भी हिंट है कि मेस में या बैरक्स के पीछे कुछ ना कुछ ऐसी फनी मोमेंट्स तो होते ही हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं या आप शेयर कर सकते हैं। मतलब ऐसे जो आज भी मेमोरेबल है, मतलब ऐसे ना जो बहुत यूनिक गया हो, बहुत ही फनी मोमेंट, जो कि ये एक ये स्टीरियोटाइप हटा दे कि भाई एक सीरियस फेस के पीछे एक और मुखौटा है जहाँ पे हमने भी शैतानी की है, एंड वी कैन आल्सो डू दैट। Okay. ठीक है. आई विल नॉट डाइवल्ज ऑल सीक्रेट्स, बट मैं आपको एक छोटी सी एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ. नॉट इन्वॉल्विंग मी ऑफ कोर्स, बट देन एक ना रिधिमा, एक ट्रेडिशन है इंडियन आर्मी में कि जब एक यंग ऑफिसर ज्वाइन करता है रेजिमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसके साथ में ना कुछ प्रैंक करते हैं. आई मीन, गुड रेजिमेंट्स डू दैट. हमारी रेजिमेंट में अभी भी ये होता है, मेरे साथ भी हुआ था. मैं अपना किस्सा शेयर नहीं करूंगा, मैं किसी और का शेयर करूंगा, विच वॉज फनियर. सो उसमें प्रैंक में क्या होता है, लाइक आई जस्ट गिव यू एन इंस्टेंस कि व्हेन यू जॉइन, सो a big party with a band and all that. Party in the sense, a group of people, they come and join you, come to receive you at the railway station. उस टाइम रेलवे स्टेशन हुआ करते थे. सो एक जीप आती है आपके लिए, बढ़िया सी एकदम फर्स्ट क्लास, पॉसिबली द कमांडिंग ऑफिसर्स जीप. एंड उसके साथ में एक दो ऑफिसर्स आते हैं. ऑफिसर्स में क्या होता है, और जवान आते हैं साथ में. तो उसमें क्या होता है कि जो जूनियर ऑफिसर होते हैं वो सीनियर बन जाते हैं, सीओ वगैरह लगा लेते हैं अपना पूरा का पूरा. हाँ, जो लेडी सीओ की वाइफ होती है वो एक जूनियर ऑफिसर बन जाती है. और कुछ उसमें से जवान बन जाते हैं. कोई हवलदार बन जाता है, कोई आपका बडी बन जाता है. बिकॉज बडी इज समथिंग, बडी इज द कॉन्फिडेंट, is the strong backbone support which an officer gets all through. I mean, he prepares, will not get into the duties of that. But buddy is the backbone. And शुरू में जाते ही एक buddy आता है आपके साथ में, जो
आपके जैसे अभी उसने ज्वाइन किया होता है एंड स्टेज विद यू। सो ऐसे ही लाइक उसको ऑफिसर को रिसीव करते हैं एंड उसके बाद में ही इज पुट थ्रू एवरीथिंग कि ये एंड ऑल एंड मेस में ले जाके पार्टी शार्टी करके एंड ऑल एवरीबडी बिहेव्स, एवरीबडी स्टिक्स देयर रोल्स कि मैं ये हूँ एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ही इज कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू टू द सीईओ ऑफिस। और वहां पे जाके उसको सारी चेंज वाले मुखौटे मिलते हैं और जो उसका रिएक्शन दिखने वाला होता है, इट इज वेरी वेरी समटाइम्स गाइस जस्ट गो बॉन्कर्स। उसमें ये भी होता है कि आपको मेस में ले जाके एंड दे गिव यू सो मच टू ड्रिंक ऑन द फर्स्ट नाइट दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू लूज कॉन्शियसनेस, जस्ट बी योर ओन सेल्फ, जो भी आप आर्टिफिशियलिटी का मुखौटा पहन के आए हो और उसको आप उतार दो एंड बिल्कुल हमें पता चल जाता है कि यार ये क्या है इसके अंदर, सेकंड लेफ्टिनेंट जो है। तो ऐसे ही रेजिमेंट में, रेजिमेंट फील्ड में थी, लेडीज वर नॉट देयर, सो लेडीज वाला एंगल उसमें था ही नहीं बिल्कुल। सो हमने ये लेफ्टिनेंट साहब आए एंड इनको हमने उठाया श्रीनगर से। तो वैसे ही जो एक सीनियर ऑफिसर था वो उसका बड़ी बन गया कि साहब जी करके साथ में एंड ऑल दैट एंड तैयार तुर करा के उसको शाम को हमने मेस में भेज दिया। सो द आइडिया वाज कि इसको इतनी दारू पिलाएंगे कि विल पास ऑफ एंड नो उसके बाद में सब मजे करेंगे, अगले दिन सवेरे इसको पीटीए पे बुलाएंगे 5 बजे। That guy was not an XND or someone. That guy was from a technical stream. So I, to confess to you, I had my first drink possibly after commission at the age of 21 or something. उससे पहले पता ही नहीं था कि ड्रिंक होती क्या है. This boy was already into drinking and smoking. एंड उसने देखा कि यार ये तो माहौल ही बहुत फर्स्ट क्लास है, उसको समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। सो ही स्टार्टेड हैविंग वन ड्रिंक आफ्टर द अदर। वो हमने 7 बजे 8 बजे शुरू करा था, फील्ड एरिया में जल्दी शुरू हो जाता है एंड ही केप्ट ड्रिंकिंग टिल अबाउट 10 11 12 1 o'clock। और म्यूजिक चल रहा था, प्रॉपरली ड्रेस्ड अप एंड ऑल दैट ना, इवन फील्ड में यू वेयर एन ओपन कॉलर, आई मीन विदाउट अ टाई एंड अ स्कार्फ, सो वैसे पहना हुआ था। धीरे 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 उसके ये बटन बटन खुलने शुरू हो गए। And then at about 12 1 o'clock he said he was smoking, he was dancing, he was very, एक ड्रिंक के बाद दूसरी ड्रिंक, सारे बंदे बोर हो गए कि हमने उसको करना था, उसने हमारे को फिट कर दिया। He said कि सर आई वुड लाइक टू हैव अ डांस विद दैट ऑफिसर एंड दैट ऑफिसर टर्न्ड आउट टू बी द सीओ। उसने सोचा कि ये छोटू है, तो उसके साथ में उसने क्लोज डांस करा बिल्कुल। और वो सीओ was so much in anger, he started fuming, so he put the whole charade to an end कि भाई अब इसके बाद में ये नहीं होगा, हम नहीं करेंगे ये सब, इसको पकड़ो और उसको सीधा कॉर्डगार्ड में डालो। तो ही वॉज इन ए ड्रंक स्टेट, उसको उठा के कॉर्डगार्ड में डाला। अगले दिन ही वोक अप एंड व्हाटएवर ही डिड वाज फॉर पोस्टेरिटी। बट ये वाले ऐसे वाले किस्से बहुत ज्यादा आते हैं कभी कभी। जैसे ही ऑफिसर अंदर आता है, उस अगर लेडी के साथ में आता है तो कुछ ना कुछ ऑफिसर को बता देते हैं कि उसको कुछ हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एंड देन द होल स्टोरी अनफोल्ड्स आफ्टर दैट। हाउ डू द वाइफ रिएक्ट, शी इज इन शॉक, देन वो शॉक से उसको फिर मेस में लाते हैं, वो रोती रोती आती है, फिर उसके ऑफिसर को सामने आके खड़ा कर देते हैं कि एब्सोल्युटली ऑलराइट। Everybody bursts into a lot of laughter. So these things keep happening. One version may change from the other one, but army is such a close knit family, and this is such a wonderful welcome that they get. It is memorable. They don't forget it for the rest of their lives. यस सर, मतलब अब इस वाले पोर्शन के ज्यादा एडिट ना बने, वरना लोग मोटिवेशन के लिए नहीं, वो आर्मी का एंटरटेनमेंट साइड वाला ज्वाइन करने के लिए बनेंगे। ओके सर, मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हमारे पास एक रैपिड फायर राउंड भी है। तो दिस क्वेश्चन इज फॉर आवर एनडीए एंड सीडीएस एस्पिरेंट्स सर। आजकल के बच्चे क्या है कि वो एक जगह ट्रेंड के पीछे भाग रहे हैं कि जे देनी है, नीट देनी है, और एक जगह हमारे आता है एनडीए और सीडीएस। तो सर आज भी हम अ, अपने युवाओं में ऐसा क्या हम देख सकते हैं, या आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे कि हाँ, कि अगर तुम आज भी एनडीए में जाओगे, सीडीएस में जाओगे, सो यू विल गेट दैट पैशन, वो मतलब क्यों देना चाहिए किसी भी व्यक्ति को एनडीए या सीडीएस का एग्जाम? इस ट्रेंड को पीछे ना जा भाग के अपने मातृभूमि के पीछे क्यों किसी को ये बलिदान देना चाहिए? Yeah, no, as I said earlier, अगर एनडीए आपको जाना है, आर्म फोर्सेस में आना है, सो द बेस्ट ऑप्शन ऑफ कोर्स इफ यू आर एंड इफ यू आर 16 17 18 is the NDA, the National Defense Academy. National Defense Academy is one of the finest academies in the entire world and the toughest too. जो इसका कैंप रोवर है, जो 4 टर्म में कैंप रोवर आता है, अगर इफ यू गो टू गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, सो इट्स अमंग्स द टफेस्ट कैंप्स वर्ल्ड वाइड इन एनी मिलिट्री अकेडमी ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपने एनडीए
पहले अपने डिसाइड करना है अपने दिमाग में दैट यू रियली वांट टू बी इन द आर्म फोर्सेस wearing the uniform. Don't go by the glamour, don't go by all the publicity which is going around, and seeing this general, that general, appearing on YouTubes and your Instagrams and all that. उस स्टेज तक पहुंचने के लिए you have to sacrifice a lot. And the secret of reaching that stage, of course, apart from your luck, is loads and loads of hard work, struggle. Army is not easy. But army, once you, if you like, if you have a penchant for such kind of a life, full of adventure, full of hardships, full of translocations, transitions, then army is the right place for you. If you like being with men, if you like being in the field, if you like to work hard, if you have that small little spark of nationalism in you, then come and join the army. As I said earlier, what army desires is not exactly the way you are. If you go for the selection systems, the NDA, the CDS, and the CTW, and all the other ones, it is seeking a person which can be trained and molded into the officer that the Indian Army needs. It doesn't require, an academician. It doesn't require a very, very strong athlete. It doesn't require somebody who's already accomplished something. No, it requires a person who possesses the basic qualities which can be molded into a good officer, the kind of officer with all the necessary officer like qualities which the army desires, or the navy or the air force desires. When I say army, please, navy and air force are clubbed into it. And be prepared for your current personality to be broken, remolded into something better, reshaped into a better version of you, the version which is absolutely aligned towards the requirements of the army. Why you should join the army now is for an excellent, excellent life of adventure, an excellent life which gives you a lot of opportunities to excel, not only in the uniform with a gun in your hand, with a rifle in your hand, but even in other sports. The army teams have always excelled in whichever sport they have taken up. There is a lot of chance, lot of opportunities for adventure, for playing sports, for individual sports, for team sports, and come and excel in the army. Of course, army entails a lot of movement. Even when you get married, there'll be a lot of movement for your kids, but that only strengthens and emboldens them. They say the army brats are the most, you can say, polished and experienced kids. The number of army brats which have made it big is, unbelievable. You will just have to Google it and see how staying with their parents, how going through the same conditions, how it affects and influences their mindset, their psyche, and burnishes their personality. It just polishes them, brings out the best in them. Army is also known for values, right? So it will, your current value system will undergo a change. It will improve further. It will get to a higher pedestal. You will imbibe, inculcate the values which a good army officer is supposed to have. And remember about the part that I said about discipline. Now that I've retired, I see, people on the other side, on the civvy street, and how lack of that internal inner discipline is affecting their lives. The army gives you, certain set of morals and values, and a very high degree of discipline, self discipline, which will actually shape the rest of your life. Even when you're out of uniform, the kind of life that you're going to lead, influenced totally by those 30-35 years in the army, is absolutely remarkable. So, if you made up your mind that this is the life for you, don't go by all those videos that you see, Ridhima, about officers' messes and partying and fancy dresses and all that. No, that is the reward that you earn for the hard work and struggle that you have in the army. That is not the army, right? The army is very, very difficult. The routine in the army is so tough. It is so, you can say, well punctuated, that once you finish it, you actually start missing
the entire life, and you don't know, really don't know what to do, because army takes care of every minute, 24/7, 365. You are in uniform. एक movie भी है ना, that the what, the army man is never off duty, something like that. इसकी अक्षय कुमार की, फौजी कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता. That's exactly the state. And if this appeals to you, if you like it, then come and join the army. Of course, the perks of being an army officer, and that too being an ex NDA, are remarkable. NDA refines you like nothing else. None of the other academies does. Because why? Because it works on your personality that much longer. In IMA, you are there for 1.5 years. In OTA, you are there just about the same time, right? But the IMA, NDA and IMA gives you 4 years of reshaping your personality, turning you into the best version that you could possibly become. So the choice is yours. Welcome to the army, but then have no, you can say, undue expectations from it. It's a tough life with excellent perks and excellent rewards. But you must work hard first to gain those rewards. Those fancy uniforms, the people on bikes, the men clinking glasses in the mess of the bar or the mess, they all come afterwards. The first thing is your duty to the nation, and actually doing your duty to the nation is very, very tough. So keep that in your mind. It's not a soft profession. It is very, very tough. But if you're made for this, you really gonna join it. Welcome. थैंक यू सो मच सर. एंड एब्सोल्युटली सर, अगर एक बार ठान लिया है हमने, हमारे ऑडियंस ने, कि जाना है, तो हम वो सारी मेहनत करेंगे जिससे हम अपने देश के लिए और अपने आप को भी ढंग से रिफाइन कर सके. ओके सर, कमिंग टू द मोस्ट डेंजरस बट माय फेवरेट सेक्शन, दैट इज रैपिड फायर राउंड. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट स्कैरी सीनियर लाइन. Come and see me later. ओके. सेकंड, परेड या फिजिकल ट्रेनिंग, दोनों में से कोई एक चूज कीजिए. No, you're talking about which is tougher. So, yes, the parade is tougher than the physical training. Physical training is much more fun. Acha, I thought that like physical training was much more rigorous. Okay, nice, sir. Okay, one military habit that never leaves you. That's waking up in the morning and being at every place at least 5 minutes in advance. Okay, टफर क्या है सर? जहाँ पे भी आप पोस्ट होते हैं वहाँ का वेदर या सीनियर? Weather is always, you are exposed to such beautiful, varied weathers that you really like it. The seniors are always difficult. अगर आपको आपका बॉस अगर एक खड़ूस मिल गया, then it makes अच्छा वाला सुहाना weather भी वो बिल्कुल खराब कर देता है, and vice versa. Even in the extreme tropical heat of Rajasthan, अगर आपका बॉस बिल्कुल fit है, एकदम सही है, then it makes everything perfect. Okay, sir. Most used line in barracks. कल बीपीटी नहीं है. BPET is a battlefield physical efficiency test. It's a tough. You got to put on backs for about 15 odd kgs on your back, carry your rifle, and run for about 5 kilometers in the morning, followed by various other things in a very, very restricted time. So that is the line generally used, which actually brings cheers from everybody there in the barrack. Okay, sir. तो सर अभी इस एज में स्लीप या फूड, दोनों में से क्या चूज करेंगे? Okay. At my age, at 60, and as a very, disciplined veteran, I would prefer sleep. I have not been a very foodie person. I always regulate my intake. And what I would advise is that with age, everyone must regulate their diet. If you're not exercising too much, then regulating your diet is an absolute essential. Sleep at my age is absolutely, absolutely essential. You have to have that minimum sleep so that your brain starts resting. Yesterday only, I had a live show with Dr. Sanju Gambhir, and we were talking about active rest and passive rest. So passive rest is the one where we lie down, but we're still watching something. You're reading something. You're listening to something. So your brain is processing. Sleep is the form of active rest where you put this processor off, and then you calmly, उसको कहते हैं ना, put everything off in your body and your mind, and you get actual rest. Sleep is the most essential thing.
at least at my age. ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस कन्वर्सेशन। और आज का पॉडकास्ट मेरे लिए हमेशा के लिए लाइफ में बहुत ज्यादा मेमोरेबल होने वाला है, बिकॉज इतने यंग एज में इतने बड़े सीनियर के साथ ऐसे बात करके इट्स फील लाइक भाई थोड़ा सा कुछ तो किया, अमेजिंग काम किया। सो आज ऑनेस्टली एक चीज बहुत ही क्लियरली समझ में आई, बिहाइंड एवरी यूनिफॉर्म देर इज डिसिप्लिन, प्रेशर, सैक्रिफाइस, बट ऑल्सो अ लिटिल बिट ह्यूमर इन योर लाइफ। तो आज जो लोग भी मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, जो ये वीडियो देखेंगे, जो ऑडियो सुनेंगे, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम यूजुअली जैसे चीजों को देखते हैं, जैसा सर ने हमें बताया कि हम वो मेस पार्टी वगैरह देखते हैं, उसके अलावा भी बहुत चीजें होती है जैसे हम उसकी एक्चुअलिटी से भी इग्नोर कर देते हैं। सो इफ यू वांट टू जॉइन आर्मी, जय हिंद, जय भारत, एंड मेक श्योर कि जब तक आप उसे ज्वाइन नहीं कर लेते आप हार नहीं मानेंगे। ओवर टू यू सर, कुछ आप हमारे ऑडियंस को कहना चाहें? नहीं, उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, व्हाट यू सेड ना, दैट यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट दिस पॉडकास्ट. Imagine, Ridhima, the situation is a 16-year-old is interviewing a 60-year-old, right? So, and the kind of the other day you told me that you wanted to join the forces, right? I wish you all the very luck, all the best, and all the luck that you would need in this endeavor of yours. And I'm very sure, looking at your personality, the way you speak, the effort behind all this podcast and all, you will make a very fine officer. You just have to put in an effort to clear the exam and get in there. NDA will take care of the rest of the thing. For the rest of you, please join NDA. We require, young, spirited youth like you to come and join. Get trained at the NDA. Come and serve the nation. Come and serve the army. Make the nation a better place. What India requires today is more disciplined citizens. And the larger number that join the army, come out and actually make a difference in the entire society, the entire nation, the better for the nation. In the end, I would only wish you and, of course, Ranbankure is the episode today, and all the very best in all your endeavors after this, right? And wish you luck and wish you many, many more episodes to come, successful ones. All the best.